1 steep, adjective. ढलवान, नामुनासिब. Of a slope, flight of stairs, or angle, rising or falling sharply, almost perpendicular. 2 optimistic, adjective. उम्मीद परस्ताना, खुश उम्मीदाना. Hopeful and confident about the future. 3 strife, noun. झगड़ा, इख्तिलाफ, निज़ा. Angry or bitter disagreement over fundamental issues, conflict. 4 confrontation, noun. झगड़ा, मुकाबला करना. A hostile or argumentative situation or meeting between opposing parties. 5 disruptive, adjective. इंतशार पैदा करने वाला, अफरा तफरी से भरपूर. Causing or tending to cause disruption. 6 descend, verb. नीचे उतरना, कम होना, नाजिल होना. Move or fall downwards. 7 catastrophic, adjective. आफत, अलमिया, सानिहा. Involving or causing sudden great damage or suffering. 8 exacerbated. मर्ज में शिद्दत पैदा करना. To make something that is already bad even worse. 9 fallout. नतीजा है. To express diff opinions about sthfteb angrily. 10 reckless, adjective. आक़िबत नाअंदेश, लापरा, बेपरवाह. Heedless of danger or the consequences of one's actions, rash or impetuous. 11 inglorious, adjective. शर्मनाक, ज़िल्लत-आमेज़. Of an action or situation, causing shame or a loss of honor. 12 muster, verb. इकट्ठे होना, फौजी दस्तों का एक जगह जमा होना. Assemble troops, especially for inspection or in preparation for battle. 13 impunity, noun. सजा से छुटकारा, इस्तिस्ना, आज़ादी. Exemption from punishment or freedom from the injurious consequences of an action. 14 malign, adjective. शैतानी, ज़रा रसा, हसद से देखना. Evil in nature or effect. 15 illicit, verb. उभारना, ललकारना, जाहिर करना, खोलना. Evoke or draw out a reaction, answer, or fact from someone. Pakistan's polity is fractured. Politicians are not willing to unlock horns, the economy is slipping down a steep slope, and terrorist forces are resurging. Some analysts view this situation as essentially a political crisis which will resolve by itself. Others, less optimistic, find Pakistan in the midst of a polycrisis, with political unrest, an economic downturn and security threats pushing Pakistan towards chaos. Then there are the realists, who are concerned that Pakistan's present civil strife might morph into a civil war. A recent editorial in this paper also rang the alarm bell. The nation seems to be flirting dangerously with civil war. It is tearing itself apart under the weight of its own contradictions. Where exactly is Pakistan headed, and is there light at the end of the tunnel? The country is in the throes of a growing civil strife, with its public places becoming a venue for regular protests, confrontation, and rioting. Social unrest is unleashing civil disorder, disobedience, and disruptive strikes. If this continues unchecked, the country could well descend into a catastrophic civil war. It would be folly to think that whatever has happened in Syria, Libya, Yemen, Afghanistan, Sudan, or Rwanda cannot happen here. Each case is different, but the common thread is an acute culture of intolerance, nurtured over time, eventually breaking down the political and social fabric. The other feature common to these countries is the sustained political instability, with neither the ruling regime nor the opposition willing to accept a compromise. With no spirit of live and let live, the resultant chaos has been exacerbated by external forces. The political fallout has always been borne by the people. Take Sudan, whose 46 million people have suffered for decades from political instability and military interventions. Recently,
the country witnessed a fratricidal power struggle between the military leadership of the regular army and a paramilitary force. As the situation spiraled towards chaos, hidden foreign hands exacerbated the civil war. The ultimate losers were the people of Sudan. The civil unrest in Syria, which started in March 2011, when the Assad regime ruthlessly suppressed protesters, quickly descended into civil war and an armed conflict that involved a complex web of domestic and foreign elements. Hundreds of thousands of Syrians were killed and millions displaced. 12 years down the line, President Bashar al-Assad has regained control of much of Syria, but the once beautiful country has been destroyed. The most telling story is that of the Rwandan Civil War, in which the Hutus and Tutsis failed to find peaceful coexistence. It ended in a genocide that left 800,000 people dead in 100 days in 1994. We must not forget that every time our country has gone through a political and constitutional crisis, the consequences have been borne by the people. In 1971, the political leaders of the time failed to respect the results of a democratic election while military ruler Yahya Khan engaged in a reckless military operation. The result was the inglorious, bloody separation of Pakistan's eastern wing. Can our political and military leadership learn a lesson from that painful chapter of our history? Can the leading lights of our political leadership muster enough courage and will to sit at the table and resolve their issues? If they don't, the situation might spin out of control the way it did in the aforementioned examples, with everyone losing and no one winning. The government led by Prime Minister Shehbaz Sharif wants the National Assembly to complete its 5-year term, while former Prime Minister Imran Khan wants immediate elections. A compromise on a date for elections should not be this difficult, as May and October are only a few months apart. The political leadership should also agree on a new social compact and rules of conduct, giving significance to the following. The military establishment has announced its intent to remain apolitical, and it must not be dragged into politics. The decisions of the Supreme Court should be respected by all. The Election Commission must not be made controversial, and social media must not be used with impunity to malign every state institution. In this charged environment, the advice rendered by the Dawn Editorial and echoed by many other independent analysts makes perfect sense. Free and fair elections conducted to the satisfaction of all major parties. The political leadership must agree on a compromise date for elections. There is no shame in reaching a compromise or conceding ground for the larger good. A compromise may not please every party, but it certainly will elicit a sigh of relief from the people of Pakistan who are losing faith and confidence in this system of governance. The writer is a former Foreign Secretary and author of Diplomatic Footprints. Published in Dawn, May 20, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. पाकिस्तान की सियासत टूट फूट का शिकार है। सियासतदान सींग खोलने को तैयार नहीं है। मईशत एक ऊंची ढलवान से नीचे गिर रही है और दहशतगर्द कुव्वतें दोबारा सर उठा रही हैं। कुछ तज्जियाकार इस सूरत हाल को बुनियादी तौर पर एक सियासी बहरान के तौर पर देखते हैं जो खुद ही हल हो जाएगा। कुछ लोग, जो कम पुरुम्मीद हैं, पाकिस्तान को एक कसीर अलमियत के दरमियान देखते हैं, जिसमें सियासी बेचैनी, माशी बहरान और सलामती के खतरात पाकिस्तान को अफरा-तफरी की तरफ धकेल रहे हैं। फिर हकीकत पसंद भी हैं, जिन्हें खदशा है कि पाकिस्तान की मौजूदा खाना जंगी में तब्दील हो सकती है। इस अखबार के एक हालिया इदारिया ने भी खतरे की घंटी बजा दी। ऐसा लगता है कि कौम खाना जंगी के साथ खतरनाक अंदाज में छेड़छाड़ कर रही है। ये अपने तजादात के बोझ तले खुद को अलग थलग कर रहा है। पाकिस्तान कहाँ जा रहा है और क्या सुरंग के आखिर में रोशनी है? मुल्क बढ़ती हुई खाना जंगी की लपेट में है और उसके अवामी मकामात बाकायदगी से एहतजाज, तसादुम और फसादात का मकाम बन रहे हैं। समाजी बदअमनी सिविल इंतशार, नाफरमानी और तखरीबी हड़तालों को जन्म दे रही है। अगर इस पर काबू न पाया गया तो मुल्क एक तबाहकुन खाना जंगी की तरफ जा सकता है। यह सोचना हमाकत होगी कि जो कुछ शाम, लीबिया, यमन,
अफगानिस्तान, सूडान और रवांडा में हुआ है वो यहाँ नहीं हो सकता। हर मामला मुख्तलिफ होता है, लेकिन मुश्तरका धागा अदम रवादारी की एक शदीद सकाफत है जिसे वक्त के साथ परवान चढ़ाया जाता है और बिलाखिर सियासी और समाजी ताने बाने को तोड़ दिया जाता है। दूसरी खुसूसियत जो इन ममालिक में मुश्तरक है वो मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसमें न तो हुक्मरां हुकूमत और न ही हिज़्ब इख्तिलाफ किसी समझौते को कबूल करने को तैयार है। जीने दो और जीने दो के जज्बे के बगैर इसके नतीजे में पैदा होने वाली अफरा तफरी को बैरूनी ताकतों ने मजीद बढ़ा दिया है। सियासी नताइज हमेशा अवाम को बर्दाश्त करना पड़े हैं। सूडान को ही ले लीजिए, जिसके 46 मिलियन लोग कई दहाइयों से सियासी अदम इस्तेहकाम और फौजी मुदाखलत का शिकार हैं। हाल ही में मुल्क में बाकायदा फौज की फौजी क़यादत और नीम फौजी दस्तों के दरमियान ताकत की कशमकश देखी गई। जैसे जैसे सूरत हाल अफरा तफरी की तरफ बढ़ी, पोशीदा गैर मुल्की हाथों ने खाना जंगी को मजीद बढ़ा दिया। सबसे ज्यादा नुकसान सूडान के अवाम को हुआ। शाम में खाना जंगी, जो मार्च 2011 में शुरू हुई थी, जब असद हुकूमत ने मुजाहिरीन को बेरहमी से दबाया था, जल्द ही खाना जंगी और एक मुसल्लह तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की अनासिर का एक पेचीदा जाल शामिल था। लाखों शामी हलाक और लाखों बेघर हुए। 12 साल बाद सदर बशार अल असद ने शाम के ज्यादातर हिस्से पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है, लेकिन कभी खूबसूरत मुक्तबा हो चुका है। सबसे ज्यादा कहानी रवांडा की खाना जंगी की है, जिसमें होतोस और तत्सी पुरम बकाए बाहमी तलाश करने में नाकाम रहे। इसका इख्तिताम एक नस्ल कशी में हुआ, जिसमें 1994 में 100 दिनों में 800,000 अफराद हलाक हुए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब भी हमारा मुल्क सियासी और आईनी बहरान से गुजरा है, इसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा है। 1971 में इस वक्त के सियासी रहनुमा जमहूरी इंतखाबात के नताइज का एहतराम करने में नाकाम रहे, जबकि फौजी हुक्मरान खान एक लापरवाह फौजी ऑपरेशन में मुलव्वस रहे। इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के मशरकी हिस्से में खूनरेजी हुई। क्या हमारी सियासी और अस्करी क़यादत हमारी तारीख के इस दर्दनाक बाब से सबक सीख सकती है? क्या हमारी सियासी क़यादत के सरकर्दा रहनुमा इतनी हिम्मत और इरादा जमा कर सकते हैं कि वो मेज़ पर बैठकर अपने मसाइल को हल कर सकें? अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तो सूरत हाल इसी तरह काबू से बाहर हो सकती है जैसा कि मज़कूरा बाला मिसालों में हुआ था। हर कोई हार जाएगा और कोई नहीं जीतेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत वाली हुकूमत चाहती है कि कौमी असम्बली अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करे, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान फौरी तौर पर इंतखाबात चाहते हैं। इंतखाबात की तारीख पर समझौता करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मई और अक्टूबर में सिर्फ चंद माह का फासला है। सियासी क़यादत को एक नए समाजी मुआहदे और ज़ाब्ता अखलाक पर भी इत्तेफाक करना चाहिए, जिसमें मुंदरजा ज़ैल को अहमियत दी जाए। फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने गैर सियासी रहने के अपने इरादे का ऐलान किया है और इसे सियासत में नहीं घसीटा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सबको एहतराम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा न बनाया जाए और सोशल मीडिया को हर रियासती इदारे को बदनाम करने के लिए बेदरेग इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इस कशीदा माहौल में दान अखबार के इदारिये की जानिब से दिए गए और बहुत से दीगर आज़ाद तज्ज़ियाकारों की जानिब से दिए गए मशवरे बिल्कुल मानी रखते हैं। तमाम बड़ी जमातों के इत्मीनान के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद। सियासी क़यादत को इंतखाबात के लिए समझौते की तारीख पर इत्तफाक करना होगा। बड़े मुफाद के लिए समझौते तक पहुँचने या ज़मीन कबूल करने में कोई शर्म की बात नहीं है। एक समझौता हर फरीक को खुश नहीं कर सकता, लेकिन इससे पाकिस्तान के अवाम की तरफ से यकीनी तौर पर राहत का सांस लिया जाएगा, जो हुक्मरानी के इस निज़ाम पर एतमाद खो रहे हैं। मज़मून निगार साबिक़ सेक्रेटरी खारजा और डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स के मुसन्निफ हैं। अख़ज़ शदा बतारीख़ 20 मई 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.